Good morning, hello everyone, and welcome to PendulumEdu. Thank you for joining in, learners. I am Manisha, and I'm bright for with you guys. So we begin with a session. Mohammed bin Salman is there. Good morning. I guess you are here for the first time. Vishwasarupam, Bolu, Sanjeev. Good morning. Good morning, hello everyone. So I welcome you right here, guys, and we'll be beginning with the editorial session. And not to worry at all because मैं आपको हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग और साथ के साथ जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड वहाँ पर होंगे that we will be discussing. Okay. Kaptan is saying that there is some issue with the volume. Let me try this. Kaptan, could you please check if it's fine now? Vishwasarupam, is it clear? Is it fine now, learners? Okay, all good. Okay, Kunal. All right. Maybe there was some issue in fixing. I plugged it in appropriately. Now, all right. Let's begin, learners, with the article for today. The article had that outreach and overreach on judicial intervention during COVID-19 crisis. Intervention is noun which is a hastachep. In Hindi, we term it as hastachep. It is interference, right? Interference. जब आप किसी चीज में interfere करते हो, जबरदस्ती किसी के मामलों में दखल अंदाजी देते हो, that is interference or intervention. उसको हम हस्तक्षेप कहते हैं. Okay? Intervention now. Sanjeev, now it's fine. Even I can get it. Okay, it's fine, I guess. Once again, and now I hope it's fine. As long as the court does not usurp executive's role, action to mitigate a crisis is welcome. Mitigate, that is to control. Okay, to subdue something. Whenever you try to control or curb something, that is mitigate, which is a verb. Definitely mitigation works as a noun subject. Is the voice still not clear, Kaptan? Okay, now it's great. Fine, great. Oh, all right, Vishwasarupam, thank you. So mitigate, as I said, it's curb, किसी चीज को कम करना, reduce करना. Okay. All right, Sanjeev. Now, so what are we trying to say? That as long as the court does not usurp executive's role. What is usurp? Now, usurp is also been used here as a verb. Okay. And yes, Sanjeev, now I got it. Okay, Vishwasarupam, we are continuing with the article, not to worry. So, usurp executive's role, that is to take by force. जब आप illegally कोई चीज किसी से by force छीन लेते हैं, that is usurp. Now, usurp, S-U-S-U-R-P, usurp, it is a verb, that is, it is telling you about the action. So, what is the writer saying? The writer is saying, as long as the court does not usurp executive's role, does not, end or does not put an end to this role, that is executive's role, then whenever it comes to, overcoming the crisis that we are dealing with, that is the pandemic, COVID-19 crisis that we are looking forward to. So this action to curb it, to control it, it is not at all feasible, it is not at all welcome. मतलब उसका कोई benefit या फायदा शायद नहीं होगा. Now, who is this executive? What sort of role this person or this particular process has? That is what we are going to discuss. Now, judicial intervention in response to the union government's flailing response. Now, whenever you say flail is a verb also, which means to swing. But here it is used as flailing response. Now, response is noun and flailing is used to qualify this noun subject response. So, flailing is an adjective. Now, flailing here means something that is not fixed. Okay, something that is not obvious. कोई चीज जो अस्थिर है, अस्पष्ट है, unclear.
Okay, something that's swinging, it's uncertain, it's not fixed, it's not steady. So the response was not clear, वो अस्पष्ट था. All right. Now, to the health crisis has reached its apotheosis. Apotheosis is noun subject. Have you ever heard of this word apotheosis? Learners, Vishwasarupam, Sanjeev, Kaptan, everyone. Apotheosis, if you've heard of it. Yes, bilkul. If you see, it says that it has reached its apotheosis, which means we're talking about zenith. That is the peak, highest point we're talking about. बिल्कुल वो अपने कहते हैं ना in Hindi, I guess if I'm right, it is like उच्च स्तर तक वो पहुंच चुका है, right? I'm writing it down. Yes, उच्च स्तर, like the highest point it has reached. Okay, now with the Supreme Court order forming a 12-member national task force for the effective and transparent allocation of medical oxygen to the states and union territories on a scientific, rational and equitable basis. Equitable is again an adjective which means balanced. Okay, something that's balanced, that is equitable. So they say that Supreme Court ने एक order लाया है and there is a 12-member national task force there, ठीक है, जो कि काम कर रहे हैं on the allocation of oxygen, okay, not just states but union territories, ठीक है, और ये किस basis पे हो रहा है? Scientific, एक logical, rational का मतलब logical and equitable, that is balanced manner में ये सब किया जा रहा है and this is being done by a 12-member national task force. Now the writer states in these lines, the writer has given that the judicial intervention, the interference that is coming from the part of the our judicial system or the judiciary, this is in response to union government का जो weird या uncertain या फिर आप कह सकते हो that was completely unclear response जो कि health crisis पर आया था और उन्होंने देखा कि भाई एक peak पर पहुंच चुका है the crisis that we're dealing with. Making recommendations on augmenting the supply based on present and projected demand and facilitating audits by subgroups within each state and UT is also part of its remit. Remit, that is, providence. जब आप किसी को कोई चीज रेंडर कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, I'm really sorry for this, प्रोवाइड कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो, so that is remit. तो कहते हैं इस remittance का, इस act of providing something or some help to someone, इसका part ये भी है कि आप नए जो भी audits हैं और जो भी demands हैं उनकी proper audits, जैसे for example if a particular lot has been dropped on or has been delivered to particular state or to particular union territory, then there should be an audit that whether it's reaching to the required lot of people or not. So all of that, auditing and all that monitoring is to be there. That's also part of this remittance. वो भी इन सब चीजों का ही हिस्सा है, वो भी टास्क फोर्स का ही काम है. Unbiased किसको कहेंगे? Equitable को कहेंगे. कुणाल, that's absolutely right. Zenith, शिखर, बिल्कुल. एक और हिंदी वर्ड हमें कप्तान ने दिया है, शिखर. That's right, कप्तान. आगे देखिएगा. The writer adds that the court has also mandated it to review the suggest measures for ensuring the availability of essential drugs and remedial measures to meet future emergencies during the pandemic. Okay? कहते हैं कोर्ट ने इसको भी इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी बना दिया है कि रिव्यू किया जाए, मेजर्स, नए मेजर्स सजेस्ट किया जाए ताकि हम जो भी एसेंशियल ड्रग्स हैं या जो भी मेडिसिन हमें चाहिए या जो भी रेमेडियल मेजर्स हमें चाहिए इस पैंडेमिक को डील करने के लिए, वो सब हम उनकी अवेलेबिलिटी को देख पाएँ कि हाँ वो सब अवेलेबल है और हमें वो सब चीज़ें फुलफिल करनी है. ये कोर्ट ने इसको मैंडेट किया है, मतलब इसको नेसेसरी बनाया है. Alright? In other words, the National Task Force has become a judicially empowered group that may significantly guide the handling of the health crisis set off by the second pandemic wave.
Faced with proceedings in high courts relating to the allocation and availability of oxygen, the center submitted that an expert committee may be constituted. अब ऑक्सीजन सेंटर्स के लिए अलोकेट करने के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी को बनाया जाए, ठीक है। विक्रम, आई मस्ट टेल यू कि मैं आपको एडिटोरियल विद प्रॉपर मीनिंग पूरा एडिटोरियल डिटेल में समझाती हूँ। एंड आई मस्ट टेल यू जो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स बोल रहे हैं विक्रम, इट्स देयर, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने उसमें लिंक दिया हुआ है जहाँ पर मैंने खुद आपको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स ही नहीं है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी हैं विक्रम। तो बिल्कुल आप जाएं, जब आप पूरा आर्टिकल समझ लेंगे आप सारे वर्ड्स रिवाइज कर सकते हैं, आपको वहाँ लिस्ट में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के यूज से आप उसको और बेटर समझ सकते हो। ओके विक्रम, नाउ सो नई एक सेकेंड वेव को मैनेज करने के लिए हम नई कमिटी जो है, नई भी नहीं, एक एक्सपर्ट कमिटी ऑक्सीजन को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाए, जिसमें कि कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, जहां पर वी वांट पीपल फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस टू फैसिलिटेट अ फ्रेश असेसमेंट ऑफ द बेसिस फॉर द एलोकेशन, जो कि फ्रेश सेकेंड वेव के चलते फ्रेश जो कि एक नया पूरा एक लिस्ट बनाए ऑडिट करके कि कहाँ किसको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। When the Karnataka High Court ordered last week that the center should supply 1200 tons of medical oxygen daily to the state, the center rushed with a challenge to the apex court. यहाँ पर जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते साफ कर दिया था कि 1200 टन की मेडिकल ऑक्सीजन डेली चाहिए स्टेट को, तब सेंटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागा था। सो जस्ट इमेजिन, अभी हम अगर बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कोई डिमांड करेगा, फिर हमें पहले से रेडी होना चाहिए। वी शुड बी वी यूज दिस वर्ड राइट, वी शुड बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। We should not wait for things to come on to us and then we'll be responding to it. We should be there, we should be all up for it, we should be ready for it, anything, because situation at present it's so uncertain, we never know. Next, the writer says, Solicitor General Tushar Mehta argued that if every high court started entertaining petitions on equitable allocation of oxygen, pandemic management would become unworkable. Unworkable, it would fail. It would fail. वो चीज बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। बर्बाद हो जाना या खत्म हो जाना कहते हैं, it would completely fail. अभी अगर हम प्रॉपरली ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं करते हैं तो हम कितने भी तरीके से पैंडेमिक को मैनेज करने की कोशिश कर लें, things are not going to be the same. चीजें हम फेल होते रहेंगे, right? The Supreme Court declined to stay the order, describing it as careful and a calibrated, well calculated. So Supreme Court ने इसको डिक्लाइन कर दिया है ऑर्डर को, और डिक्लाइन टू स्टे द ऑर्डर मतलब उन्होंने रोकने से मना कर दिया है, और कहा है कि बहुत ही सोचा हुआ और कैलिब्रेटेड मतलब कैलकुलेटेड थॉट है. So it has to be there. We have to actually ensure that we do it. Several high courts and Supreme Court are examining different aspects of the pandemic response, including availability of beds and oxygen. So they are working on everything. They're trying to overcome, they're trying to work on everything, whether it's high courts, all the states high courts, or the Supreme Court, that's the apex court. The trend did raise concerns about the judiciary encroaching on the executive domain. There is some merit in the argument that allocation of resources based on a formula related to the present and projected requirements of each state is indeed an executive function. However, as the daily infection numbers and death toll have acquired frightening levels, the constitutional courts felt obliged हिंदी में हम कहते हैं आभारी, they felt the need of, okay, they felt the need of. So here if you see, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम ट्रेंड देखें, okay, तो जो जुडिशरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है.
कुछ ऐसे, अब जैसे हम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस की बात करें तो वो होने चाहिए ऐसी लॉजिकल चीज पर, रैशनल और इक्विटेबल, बिल्कुल करेक्ट है ये, रैशनल एंड इक्विटेबल बेसिस पर उस मैनर में हमें सारे रिसोर्सेज अलोकेट करने हैं। कहते हैं कि डेली इन्फेक्शन नंबर और डेथ टोल जो है वो बहुत ही फ्राइटनिंग लेवल्स पे पहुंच चुका है। वी ऑल नो दैट वेयर वर वी थाउजेंड्स, नाउ वी आर इन लैक्स, एंड दैट टू 5-10,000, नाउ वी आर एट 4 lakhs, नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स हैं वो समझ रहे हैं कि यस हम आभारी हैं, वी फील द नीड ऑफ, दे फील इट, कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ठीक है, और लोगों की जो राइट है जीवन जीने की और अच्छी हेल्थ की, उसको वो ज़रूर से फुलफिल करें, उसको ज़रूर से, all the courts they feel this necessity, they are there that they should be obliged for this, उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी होगी। Alright, is it clear guys? Anybody having any sort of issue and problem until here? Anybody in any sort of confusion, learners? Okay, so going ahead, the writer also says that it cannot be forgotten that the judiciary drew much flack last year. Flack, that is criticism. फ्लैक इज क्रिटिसिज्म, उनको कटाक्ष जो है बहुत फेस करना पड़ा है, ठीक है, फॉर इट्स इनिशियल फेलियर टू मिटिगेट द क्राइसिस। सेट ऑफ मीन्स स्टार्टेड, जो शुरू हुआ था, इट्स अ फ्रेजल वर्ब, तो बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा बाय द लैक ऑफ सकूर। सकूर इज असिस्टेंस, हेल्प, तो उनके पास कोई हेल्प नहीं थी, कोई मदद नहीं थी और फेल होते रहे हम, बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हु हेड्स द बेंच हियरिंग द सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स। सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है, दिस इज अ फ्रेज का मतलब मैं आपको साफ हिंदी में समझाती हूँ। सुओ मोटो का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, दोनों पार्टी में से किसी ने भी कोई भी प्रकार की रिक्वेस्ट कोर्ट से नहीं की, बट कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया है उस चीज को लेके, तो भाई कोविड भी नहीं कहेगा और लोग भी क्या कहेंगे कोर्ट को, अभी कोई केस तो नहीं है, बट सुओ मोटो मीन्स कोर्ट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां फुलफिल की है, किसी ने कुछ नहीं कहा। Has clarified that the court was not usurping the executive's rule, but only wanted to facilitate a dialogue among stakeholders. एग्जीक्यूटिव रोल मतलब आप कह सकते हो मीडिएटर, तो कोर्ट कह रहा है कि वो इस एग्जीक्यूटिव रोल को खत्म नहीं कर सकते, बट वो जिनका भी जिनकी सारी की सारी लाइफ कह सकते हो, जिनका सब कुछ दाव पे है, उनकी वो बात सुनना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए वो they were waiting. As long as this position is clear, the present intervention need not be seen as a dangerous overreach. कहते हैं कि जैसे ही एग्जीक्यूटिव रोल का जो भी है वो अगर हट जाता है, सो जो कि इंटरफेरेंस जो सबको डेंजरस लग रहा है, that won't be dangerous anymore. Right, because this intervention maybe to an extent is important. जैसे कि जो सुओ मोटो प्रोसीडिंग हुई या जो कोर्ट ने इंटरवीन करके उस चीज पे जो निर्णय सुनाया है, whether it's हाई कोर्ट, whether it's सुप्रीम कोर्ट, everyone, अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर राइटर ने कहा वो भी खुद फील कर रहे हैं दैट इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लोगों की लाइफ और हेल्थ जो है बेसिस को डेफिनेटली उसको लुक अप टू करें और उनका ध्यान रखें अपने लोगों का। यस, सिंपल वर्ड्स में सुओ मोटो को मैं कहूंगी ऑन इट्स ओन। वेरी गुड, थैंक यू कुणाल। सिंपल वर्ड्स में ऑन इट्स ओन, अपने आप, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, अपने आप उन्होंने निर्णय सुनाया। यस विक्रम, आई होप दैट दिस हेल्प्स यू एंड आई एम ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट, बिकॉज सी if you get the meaning of all these words, it helps you, it does, okay, you know the meaning of the words, now you can go for the synonyms and antonyms also, okay. चले लर्नर्स, टॉप 5 वर्ड्स पर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, फटाफट से, एंड नॉट टू फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज के टॉप 5 वर्ड्स हैं फ्लेलिंग जो कि एडजेक्टिव है, इक्विटेबल भी एडजेक्टिव है, कैलिब्रेट वर्ब, सकुर नाउन, असर्प भी वर्ब है। Anybody, if you have any sort of confusion related to the article, you can ask me.
Fourth, Sakur is assistance. That's right, Kaptan. Very good. Yes, Abhi, flailing is not certain, not fixed. Yes. Equitable is balanced. Very good. Balanced. That's right. Very good, Abhi. Gaurav, Kaptan. Yes, unbiased, बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हैं this is unbiased. That's right, Deepak. That's correct. Very good. Well calculated. That is calibrated. Help, बिल्कुल help की कह सकते हैं अभी. That's right. And what about usurp? Usurp is to remove, to end, to remove or to end. That's right. Forcefully, to take by force, to forcefully end something. That's right. All right, so we have completed this, like top 5 words. Tip of the day, my learners, I would give you, yes, Abhi, Deepak, Kaptan, Kunal, Gaurav, Vikram. That's absolutely right. So tip of the day, I would simply say that with remove, we generally use from. Whenever you are talking about removing someone from a position, so he was removed from office because of this and this reason. He was removed from this position because of his unprofessional behavior. So with remove, we use from. Okay, so do remember this. Yes, pad hatya lena, that is a serve. That's right. I hope that this is clear to everyone. Kaptan, I cannot do the calculation like that. You have to do it by your own or use a calculator. So this is what the session was all about, learners, for today. I hope that you've got it right. And you guys would be there with me at 10 a.m. 10 बजे मिलते हैं guys, ठीक है? 10 बजे मिलते हैं for the session SSC, जहाँ पर हम miscellaneous questions practice करेंगे. And be there with me. SSC को बिल्कुल lightly नहीं लेना. आपको लंबा समय मिल गया है, थोड़ा extend हो गया है, तो उसको lightly मत लीजिए. Keep on preparing. Okay? Thank you so much, learners, for joining in. Take good care of yourself. Please take care of yourself and your family. Thank you.